I might just get my colleague to jump in. Represents people with many images. And please get Sunny. तू किधर इधर से मान इधर से पूरा का पूरा मैम लुक किया मैम राइट मैम सनी लुक किया सनी राइट मैम राइट सनी मैम लुक किया सनी मैम मारो ये फ्लैश ब्लॉक होते हैं फ्लैश अडकले बस 2 मिनिट एक अरे थैंक यू हमारा तो तुझा फोटो आहे अरे माझा फोटो पण हा त्याचा फ्लॅश अडकवते ना पूर्ण दादा एक सेकंड सोलो इंडिविजुअल मैम सेंट आ गई है शबाना जी शबाना जी समोर मैम यहाँ पे शबाना जी यहाँ पे शबाना मैम सामने सनी समोर मैम ये मारे मार बच्चे शबाना जी सामने नीचे शबाना जी सामने आकर नीचे आ जा शबाना जी आपके सर के थोड़ा खाली होना यार सर आप शबाना जी सामने शबाना जी थोड़ा नीचे मैम सेंटर मैम यहाँ पे शबाना मैम यहाँ पे अरे क्यों I will be manager, don't worry. मैं पकड़ चलो रोल सकता भाई जल्दी करो अरे रोल So you stay with me, then they'll ask me the correct things. And maybe we should invite Sunny's family because that would be a nice आज के opportunity. इस ओकेशन के बारे में हमने देखा सनी को अवार्ड मिला उनकी फिल्म इंटरनेशनल लेवल पर लोगों को पसंद किया आप यहाँ पर प्रेजेंट हैं आप बताइए क्या टेक होता है आपका इस मौके पर जब हिंदुस्तान का नाम इंटरनेशनल लेवल पर रोशन किया जाता है जाहिर है मुझे बहुत खुशी हो रही है शायद आप लोग ये नहीं जानते हैं कि एक्टा के जब अवार्ड्स हुए थे तो उसमें जूरी में अनुपम खेर और मैं दोनों थे और हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि रसल क्रो जी जो इतने बेहतरीन एक्टर हैं जिसको सारी दुनिया सराहती है वो हमारे चेयरमैन थे जूरी के। तो जब हमने ये तमाम फिल्में देखी और पता चला कि सनी को ये अवार्ड मिला तो जाहिर है हमको बेहद खुशी हुई, लेकिन खुशी इस बात की भी हुई कि अब दुनिया ये जान रही है कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ वेस्ट की तरफ नहीं देखें, एशिया पैसिफिक एरिया की तरफ देखें, क्योंकि हमारी जो कहानियाँ हैं वो हैं तो ह्यूमन कहानियाँ, लेकिन हमारे बोलने का अंदाज़ अलग है। और इसलिए मैं इनका ख़ास तौर से बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने बेस्ट एशियन फिल्म को इंस्टीट्यूट किया है। और जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई है वो ये है कि आमिर खान की फिल्म दंगल को, नीतीश तिवारी की फिल्म दंगल को यूनैनिमसली बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है क्योंकि ये एक बहुत अच्छी मुहिम है। और इसी तरह से हम अपना जो सिनेमा है, देखिए हिंदुस्तान जो है वो India, as you know, makes the largest number of movies in the entire world. We make more than twice the number of films that Hollywood does. We love it in New South Wales, Australia. We love the Indian film industry. Make more. We will definitely make more with collaboration from you. But you know, I really think what is very important is that to bring Asia Pacific cinema together, it's very important because we tell tales about human stories, we tell tales about relationships, about disappointments, about murder, about mystery, but our gaze is different.
And I think that gaze needs to be celebrated and it needs to be included when we talk about international cinema. And that's why really thank you very much for this attempt and we really look शबाना जी, forward to जैसा it. कि आपने भी बताया और अब हम देख रहे हैं इंडियन सिनेमा की जो बात है इंटरनेशनल लेवल पर की जा रही है, हर किसी को पसंद भी इंडियन फिल्में आ रही है, तो जो इंडियन सिनेमा का जो मार्केट, हम चाइना में देखते हैं कि आमिर खान की फिल्म दंगल ने कितना अच्छा किया, हम देख रहे हैं अब जो इंडियन सिनेमा का मार्केट पूरी दुनिया में जिस तरह से इम्प्रूव हो रहा है, छा रहा है, उस तरह से कैसे देखते हैं आप एज एन एक्टर, एज एन बीइंग ह्यूमन? जाहिर है कि बहुत ज़्यादा खुशी की बात है क्योंकि हिंदुस्तानी सिनेमा हमेशा दुनिया में पसंद किया जाता था। हम जानते हैं कि राज कपूर जी की फिल्मों को कितना पसंद किया जाता था, लेकिन ये पॉकेट्स में किया जाता था। आज ऐसा हो गया है कि हमारी फिल्में जो हैं दुनिया में चारों तरफ फैल रही हैं और ये जाहिर है कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। Thank you. Now she's with me. I can't talk to you anymore. Thank you. Sunny, come please. अरे किया ना? ले लिया ना? Come. एक शॉट ले लो। बैठ जाओ। सनी, आपको ठीक सामने देखना, ठीक है? रोल है। पहले इनका सेटअप रेडी हो जाए। सनी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको ये अवार्ड मिला है, आपके हाथ में है, आपके भाई भी बहुत ही अच्छा है। हिंदी में आपसे जानना चाहेंगे क्या फील करते हैं आप, कितने एक्साइटेड हैं आपकी फिल्म को और आपको अवार्ड मिला है? सामने देखिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रहा है, बहुत एक्साइटेड था और बहुत मजा आया। और शबाना जी यहाँ पर प्रेजेंट थी, बहुत ही अच्छी बात कही उन्होंने आपके बारे में, आपको बहुत ही क्यूट बोला। क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? शबाना के बारे में थैंक यू बोलना चाहता हूँ उसको। जी, आपने अपने स्टेज पे आपने अपने डैडी को थैंक यू कहा, क्योंकि आपने ये भी बताया कि आप लिखी वजह से आज आप हैं। डैडी को कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ कि पापा थैंक यू मेरे को। और जो हिंदी फिल्में देखते हैं आप, और किसके बहुत बड़े फ़ैन हैं आप हिंदी फिल्मों के? मैं रजनीकांत का। रजनीकांत जी का, ओके। उनके साथ काम करने की कोई ख्वाहिश है आपकी? हाँ, कौन से एक्टर के साथ काम करने की ख्वाहिश है? रजनीकांत के जैसे। जी, और फीमेल एक्टर मतलब हीरोइन किसी का नाम आपको बहुत ही अच्छी लगती है? हिंदी फिल्म में कोई हीरोइन अच्छी नहीं लगती आपको? नहीं। कोई नहीं? ओके, तो ये आगे आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि लोग एक्शन करते हैं, जैसे आपने भी देखा होगा टाइगर बहुत ही अच्छा एक्शन करते हैं, शाहरुख खान बहुत ही अच्छा रोमांस करते हैं, और बहुत सारे एक्टर बहुत ही फिट रहते हैं। आप क्या करते हुए देखें, हम आपको देखेंगे, लाइक एक्शन देखेंगे हम आपको रोमांस में देखेंगे, हम आपको ड्रामा करते हुए देखेंगे, कोई ऐसी कोई इच्छा है आपकी? मैं सब करूँगा। सब करेंगे आप? ओके। तो सनी, पेरेंट्स से किस तरह का सपोर्ट मिला, आपके माँ बाप से किस तरह का सपोर्ट मिला आपको अपने काम के जरिए, किस तरह सपोर्ट मिला? मेरे को पापा से सपोर्ट मिला बहुत। किस तरह आपको रोटेट करते थे, किस तरह काम के लिए आपको प्रेरित करते थे आपके डैडी? सुबह उठाना से लेकर खाना खिलाने तक क्या कहना चाहिए? कुछ नहीं, लेकिन पापा मेरे को पापा एक ही सपोर्ट किया है बस, और बहुत अच्छा है। लायन फिल्म के लिए शूट करते सबसे ज़्यादा अनुभव क्या रहा, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस कौन सा रहा? एक्सपीरियंस गाते हुए साइन लाइन में देता था वो, और मेरा पापा कैमरा के आगे खड़ा रहता था, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता था, उसके वजह से मैं काम कर पाया। गार्ड डेविड के साइन लाइन में बोला था।
अच्छा, लास्टली अपने फैंस को क्या कहना चाहते हैं? आपकी फैंस बहुत बड़ी हो चुकी है, तो आप अपने फैंस को फुल पावर के साथ जो कुछ कहना चाहते हैं आप अपने फैंस को? मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ मेरे फ्रेंड्स के लिए। थैंक यू सनी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। Hello. First, take some visuals. After that, I'll take. पहले इनका एक हो गया। हो गया भाई। और भाई तुमको भाई करेंगे। कंट्रोवर्सी क्रिएट करना। तंबूरा। तुम मेरे साइड आना। ये तंबूरा। चलो रोले। जाना जी, सबसे पहले जाना चाहिए आज के इस ओकेशन पर, आज के इस इवेंट पर हम लोगों को इंटरनेशनल लेवल पर हमारी हिंदुस्तानी फिल्मों की बात की जा रही है। लायन को देखा, सनी पवार को देखा, शबाना आज़मी यहाँ पे प्रेजेंट है। आप बताइए क्या टेक होता है ऐसे में जब हमारी हिंदुस्तानी सिनेमा को इंटरनेशनल लेवल पर? देखिए जी, जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक़ है, इसकी तरक्की से ज़्यादा दिल को किसी चीज़ की खुशी नहीं पहुंच सकती। हमारा सिनेमा जो है आज वो नंबर 1 है, हॉलीवुड से हर से ऊपर। हमारे हम लोगों की प्रोडक्शन चीज़ें, हम लोगों के टेक्नीशियन, आर्टिस्ट नंबर 1 इन द वर्ल्ड, और ये बहुत अच्छा लगता है। और ये जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया इसमें आ रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक वो दुनिया का हिस्सा भी हम लोगों की इंडस्ट्री ने जो है वो अपनी इंडस्ट्री में लिया है। और ये धवल पटेल जी ने जो डिसीजन लिया है इस पिक्चर में इन्वेस्ट करने का, बनाने का, इट इज़ वंडरफुल। और अनुपम शर्मा जी ऑफ कोर्स इज़ अ वेरी फाइन आर्टिस्ट, और वो डायरेक्ट कर रहे हैं इसको। आई हैव अ फीलिंग दैट इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल वंडरफुल फिल्म। जी, आपका टेक? आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस फैक्ट, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं दैट नीड टू बी टोल्ड, एंड इस किस्म की जो जॉइंट वेंचर्स होती हैं उसके थ्रू आई थिंक ग्लोबली हम लोग स्टोरीज़ को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। और अलग अलग जितने भी आई थिंक दुनिया में कलाकार हैं, डिफरेंट टेक्नीशियंस, डिफरेंट आर्टिस्ट्स, दे कैन ऑल कम टुगेदर एंड रियली शोकेस समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस। बहुत सारे स्टार किड लॉन्च हो रहे हैं जी, हमने आपको देखा है। अब आने वाले दिनों में बिग बजट की ऐसी कोई फिल्में हम आपको करते हुए देखेंगे? आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट आप जो शेयर कर सकते हैं? जी जी, आई जस्ट डिड अ शॉर्ट फिल्म विच इज़ ओपनिंग अप एट कांस फिल्म फेस्टिवल, and it's like a British film but like a crossover kind of a film, and I'm very much interested towards doing films and being a part of stories which have a meaning. So right now I'm really looking more towards you can say artsy cinema, performance oriented stuff. मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगे बेटी के बारे में? अच्छे प्रोजेक्ट जिस तरह से इन्होंने बताया। जी हाँ, आई थिंक फॉर अ यंगस्टर एंड सो यंग, शी इज़ वेरी कॉन्शियस of the roles she's going to play and very very selective. बाज़ वक्त हम खुद कहते हैं कि कब तुमने क्या करना है ये बताओ, but she is more performance oriented person. और एक है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, all performance base is going to be announced very soon and everything good. बाकी आप सबकी दुआएं, हमारी दुआएं तो हमेशा बिल्कुल। and she's a very fine singer, she's also coming out with a song. I know. और बाकी उसका ऐसा कहना है कि जितना पैसा आज एक फिल्म में लगता है, ये हमारे एक समाज का ऐसा हिस्सा होना चाहिए कि एक मैसेज होना चाहिए कि जो ख़राबियाँ, ये चीज़ें जो सब आप देख रहे हैं, सुनने में आ रही हैं, जो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग हैं, इनकी लिए कुछ ना कुछ इनपुट और इनकी मदद ज़रूर करें, एक लोगों तक एक ऐसा पैगाम दें कि उससे समाज सुधारा जाए, एक हिंदुस्तानी को, एक कल के यंगस्टर को एक अच्छा पैगाम मिले। जी, क्योंकि आपने बताया कि बहुत सारे हार्ट ब्रेकिंग चीज़ें इंडिया में हो रही हैं, बहुत सारे, आपको जस्टिस मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। नहीं, मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। ये भी इसमें जिनकी इन्वॉल्वमेंट है, जैकी मिलर की, शी इज़ ऑल्सो अ वेरी ग्रेट
सोशल वर्कर एंड वी ऑल आर। और ये तो ऐसी एक चीज़ है कि एक बेटी तो हम सबके घर में है, बेटी ही माँ बनती है, बेटी ही बहन होती है, और बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं और ये सब्जेक्ट उन्होंने बहुत सीख किया, इसलिए वी नीड टू डलवाना चाहिए। इज अ गुड बॉय, आई लव हिम, सो आर यू। मैडम अरुण पीछे शॉर्ट्स थोड़ा राइट मैडम प्लीज चलो रोल है सबका चलो रोल है। अनूप जी मैडम आपसे जानना चाहेंगे इंडियन सिनेमा की बात जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर की जा रही है, और अभी हमने देखा कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन एकेडमी ने सेलिब्रेट किया, फेलिसिटेट किया, क्या टेक होता है आपका? हमने देखा कि दंगल को चाइना में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला, क्या टेक होता है आपका जिस तरह से इंडियन सिनेमा को इंटरनेशनल मार्केट में सराहा जाता है? पिछले कुछ सालों से क्या हुआ है कि जिस तरह की स्टोरीज़, जिस तरह की कहानियाँ हमारी हिंदी फिल्मों में बनने लगी हैं, आई थिंक वो कहीं ना कहीं वो फॉरेन मीडिया को अपील करती हैं। जो इंटरनेशनल फिल्म्स जिस तरीके से बनाई जाती हैं, वो एटमॉस्फेयर, वो वर्क कल्चर जो है हमारी हिंदी फिल्मों में भी आ गया है। हिंदी फिल्में पहले से ही बहुत पॉपुलर थी अब्रॉड में, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी हिंदी फिल्मों की इमेज बहुत ऐसी थी कि गाना बजाना, नाच गाना, बस एक एंटरटेनमेंट जिसे कहते हैं ना। लेकिन अब जो पिछले 8-10 सालों में जो फिल्में बननी शुरू हुई हैं, और बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं जिन्होंने ऐसी फिल्म बनाई हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर, चाहे वो फेस्टिवल्स के ज़रिए हों या ऑडियंस के ज़रिए हों, उनको रिकग्निशन मिला है। और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल सिनेमा ने भी हमारी फिल्मों को बहुत सीरियसली लेना शुरू किया है, फिल्मों को भी, हमारे एक्टर्स को भी, और बहुत बड़ा रोल है एक्टर्स का भी जिन्होंने फॉरेन फिल्म्स में काम किया है। सो अब तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि ये बस थोड़ा सा गैप रह गया है। It's just a matter of say another few more years. There's so much of exchange, you know. उनके एक्टर्स यहाँ आ रहे हैं, हमारे एक्टर्स वहाँ जा रहे हैं, उनके डायरेक्टर्स यहाँ आ रहे हैं, हमारे डायरेक्टर्स वहाँ के एक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं। इतना ज़्यादा प्लेटफॉर्म जो है इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और ये तो ज़रूरी है ना। व्हाट इज़ आर्ट ऑल अबाउट? आर्ट किसी सरहद और किसी देश के तक थोड़ी सीमित रहना चाहिए। So it is wonderful. आप इमेजिन कर सकते हैं कि सनी पवार मुंबई का एक कहीं छोटे से इलाके में रहने वाला एक बच्चा जो है वो एक ऑस्ट्रेलियन फिल्म में इंटरनेशनल लेवल पे, कितनी बड़ी बात है। मतलब ही वाज, व्हेन आई सॉ द फिल्म आई थॉट ही इज, मतलब ये पता नहीं कौन से हम एक्टर्स बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, बट ही वाज सो वंडरफुल। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आज ये बच्चा जो है इंटरनेशनल लेवल पे घूम रहा है, कल को ये बड़ा होगा और अच्छी फिल्में करेगा। सो कनेक्ट जो है वो थोड़ा शॉर्टर होता जा रहा है, एंड आई थिंक इंडियन फिल्मों का जो एक क्रेडिबिलिटी है उसका ग्राफ भी बहुत अच्छे लेवल पर और बहुत बढ़ता चला जा रहा है, वो ग्राफ में कहूँगा। यस, आई मीन मैं अनूप जी की सारी बातों से सहमत हूँ, और ये बात पहले इक्का दुक्के एक्टर्स ही थे, ओमपुरी जी थे जो बाहर काम कर लेते थे, या कबीर बेदी जी दिख जाते थे वहाँ की फिल्मों में, पर अब कितना होराइजन हमारा बढ़ रहा है, एंड वहाँ के एक्टर्स यहाँ आ रहे हैं। इनफैक्ट मेरी सिस्टर कजरी, माई चाचाज डॉटर, वो लंदन में बोर्नमिथ में वहाँ पर एक डायरेक्शन स्टूडेंट थी फिल्म्स की। उसकी पहली फिल्म जो स्टूडेंट लेवल की ऑस्कर्स के लिए सिलेक्ट हुई, सेकंड फिल्म उसकी अब कांस में जा रही है, एंड शी हैज़ जस्ट बीन ऑफर्ड टू डायरेक्ट अ एंटायर ब्रिटिश फीचर फिल्म, you know, so that's a big thing, and she's all of 23 years old, you know, so there's so much talent, and internationally वो recognize हो रहा है, जो बहुत बड़ी बात है। अनुप जी, सिर्फ एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आसिफा को जस्टिस मिलना चाहिए? जी, जस्टिस मिलना चाहिए तो कोई सवाल ही नहीं है, ये तो कोई सवाल ही नहीं है, जस्टिस ही मिलना चाहिए। और इट्स नॉट अबाउट दिस वन केस, ये इस तरह के केसेस आते हैं, बहुत प्रोमिनेंट होते हैं,
कहीं ना कहीं इसके ज़रिए जो है एक लोग फिर से जुड़ते हैं, लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि ऐसे केसेस हों ही ना। क्यों? मतलब मैं पिछले कई सालों से जो अपना शो कर रहा हूँ, मैं उसमें एक बात मेन कहता हूँ कि हमें सोच बदलने की ज़रूरत है। हमारी अपनी मेंटालिटी, हमारे अपने जो मेल थिंकिंग है, यू कैन इमेजिन, बिकॉज एवरी मेल, अगर आप जो भी एक एक्यूज्ड है, कल्प्रिट है, जो हु इज द क्रिमिनल, वो कहीं ना कहीं खुद भी फादर है, वो कहीं ना कहीं खुद भी सन है, वो कहीं ना कहीं खुद भी किसी का हस्बैंड है। सो you have to think that way. We need to clean our mind right now. और ये बात हम काफ़ी सालों से अपने शो के ज़रिए भी कहते आ रहे हैं कि सोच बदलने की ज़रूरत है। ये जो हो रहा है, ये बड़ी छोटी सोच का नतीजा है। So, कहीं ना कहीं हमें अपने घर से अपने मर्दों को जो ट्रेन करते हैं ना, जब लड़का बड़ा होता है घर में, उसकी मानसिकता को, उसकी सोच को इस तरह से डेवलप करना होगा कि वो औरत को सिर्फ एक ही नज़रिए से ना देखे। आई थिंक जिन घरों में बेटे हैं ना, उनकी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को, अपने लड़कों को सही तरह से पालें। और जहाँ तक इस पूरे केस का सवाल है और जस्टिस, ऑनेस्टली मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया पे और मीडिया पे बहुत बातें हो चुकी हैं और आई डोंट थिंक आई वांट टू से एनीथिंग। थैंक यू सो मच। Few seconds, wait, some visuals. Please come. हो गया? Good evening, everyone. Thank you, and a very warm welcome to India to all our guests from New South Wales. I hope you are enjoying the lovely Indian weather. Welcome. Last year, I had the privilege of working very closely with Damien and his team on the inaugural Best Asian Film Award. And what I was really, really impressed was how open and truly inclusive they were in their vision, in the way they were executing it. They were very open to all suggestions, comments, cultural nuances, things that they might find funny but were offensive to other audiences, and at the same time not compromising on the quality of the films at all. So I'm very excited to be back working with AACTA on the second Best Asian film. As we all know, Indian film industry is diverse, rich and amazing, and this year we'll have a very tough job because some of the most iconic filmmakers are putting forward some very, very strong films. So it'll be interesting and exciting to see the final lineup. And I congratulate AACTA and wish them all the very best for being so inclusive in their awards. And it's just so wonderful to work with a team of people for whom inclusion is not just a hashtag. So thank you so much, and congratulations to you once again. Thank you very much, Mitu. Now, as I mentioned, a major objective of the program is to encourage greater collaboration between the Australian screen industry and our counterparts in India and throughout Asia. There have been some strong recent examples, with the most exemplary, of course, being Lion. Lion is such a great illustration of cross-cultural storytelling that interweaves Australia and India in a very special way. We're very pleased that the film received 6 Oscar nominations, it won 2 BAFTAs, it received 12 AACTA awards, it became the 5th highest grossing Australian film of all time. It took $50 million at the US box office, and it took $140 million at the worldwide box office. It's amazing. We would very happily take an order for another 10 of those films. And we're really pleased to have, along with Sunny Pawar tonight, really pleased to have another one of Lion's stars here with us tonight. It's Tanishta Chatterjee. Tanishta, great to have you here tonight. A fantastic performance, and congratulations on the film. Tanishta is... Great. No, just saying hello. Thank you.
And look, there's some great forthcoming collaborations between Australia and India. One is the Australian India supported documentary The Run. It's based on Pat Farmer's monumental Spirit of India Run. There's an Australian-American thriller, Hotel Mumbai, which is filmed both in Australia and India. And we're really pleased about the Sydney-based thriller Honour, which is the first Australian film to be completely funded by Indian private investment. We're very pleased to have a great example of one of our Indian-Australian filmmakers here tonight. That's Mr. Anupam Sharma. Anu has been a real pioneer of relations between the Australian and Indian film industries, and he's been a really helpful advisor to our Australian Academy as we've set up this regional program. In 2015, Anu, of course, made the Australian-Indian romantic comedy Un-Indian, and most recently wrote, directed and produced The Run, which debuted at the Newcastle Film Festival in the last few weeks and impressively took out the festival's inaugural Best Documentary Award. Congratulations, Anu. Please welcome Anu to say a few words. Thanks, Damien. I know I've got a time limit, but I hope my clock starts after I acknowledge some amazing people in this gathering. Of course, Honourable Premier of New South Wales, Gladys Berejiklian, thank you so much for your support and your agency's support. I've got two, should I call them mentors, guides, old friends, Dr. Jeff Lee, who have bothered at all odd times to shoot with Brett Lee in his constituency in Parramatta, and he's always come through. And of course, Honourable Barry O'Farrell, the ex-Premier of New South Wales, who announced our Australian Film Festival with Baz Luhrmann and held that little party with Shah Rukh Khan we still remember. So thank you, Mr. O'Farrell. Can I also acknowledge, of course, Tony Huber, Consul General of New South Wales in India, and Rohit Manchanda, the Trade Commissioner, who I met 15 years ago when he started with Austrade. And last but not least, I'd like to acknowledge Jackie Miller-Charlton, MBE from Newcastle, United Kingdom, who is working on some amazing stuff with Newcastle, New South Wales and Australia. It's a very emotional moment. It's an interesting milestone, and I feel like I'm within the family. This relationship began years ago when a blonde, blue-eyed West Australian actress became a Bollywood star in Hunter Valley in 1935. But the real push began, again, I'm sorry, I'm an Australian, but I'm going to be biased as a New South Welshman, began from Sydney in 1998 when Feroz Khan, the legendary filmmaker, shot his film and scripted Sydney. Since then, there have been over 275 projects between Australia and India, and New South Wales has won most of them. It has set many milestones, whether it's the first film fund, whether it's Dil Chahta Hai, an iconic film, whether it's delegations, festivals. So over the past 20 years, all these things have happened. So what's new today? Well, the first thing new today is that we have a CEO and his team who have put their money where their mouth is. And I'm talking about the gentleman here on my left, Damien Truhala, AACTA, and his Lieutenant Jennifer North. They have actually cohesively brought together all these fragmented pieces which the Australia-India film links, like an Indian goddess, have all these different arms. And Damien and Jennifer have managed to get it together. So thank you so much, Damien. Big round of applause for you guys. I won't take much of your time. Today is also a milestone, thanks to New South Wales support, which has been bipartisan over the last 20 years, whether it's Labor or Liberal. They've all supported these vibrant links between Australia and India, and Australia and New South Wales and India. And today marks a huge milestone. Premier, you will be proud to know that with the hard work of all people in New South Wales, today we announce the first Australian film with complete investment out of India to be based out of Sydney, New South Wales. So thank you so much. And can I acknowledge Mr. Dhaval Patel, wherever he is, the wonderful gentleman who is writing us all the checks, and our co-producers and executive producers, Ritesh Kodecha and also Anuya Chauhan. Today also, finally, today also marks the first ever private investment and distribution guarantee out of India for any Australian documentary, named Bollywood Down Under. The film is a comical, tongue-in-cheek, humorous, musical, colourful look through the point of view of New South Wales as to how Australia failed or succeeded in wooing the Bollywood bandwagon. Both these films will be out later this year, and we thank you again, Premier. We thank all the people involved, AACTA, of course, Screen Australia, which promotes diversity,
Group of Australians out there at the back, people like Kabir, the actor, and the editor, Geeta, and financial consultant, Hansi. These New South Welshmen and women who are based out of Bombay and who are actually the foot soldiers. So thank you once again, Damien, for this opportunity. Premier, thank you to you and your agencies. Let's make some movies, guys. Thank you. Thanks very much, Anupam. So many things, great things are happening, so many great things will be happening. We're really delighted that our Australian Academy has been developing in collaboration with our strategic partner, the New South Wales Government. The New South Wales Government's support of our activities and the Australian screen industry in general is really outstanding, and it's no surprise that New South Wales is home to a very large majority of all of Australia's screen production. As Anu was saying, the New South Wales Government has a very strong understanding of creative industries and the environments in which they thrive. We are very pleased to have this special delegation to from New South Wales here tonight, including the Honourable Barry O'Farrell, New South Wales Minister Special Envoy to India. Thank you, Barry. Dr. Jeff Lee, Parliamentary Secretary to the Premier. And we're also really pleased to have the Australian Consul General to Mumbai here tonight, Mr. Tony Huber. And now, finally, it's my chance to introduce properly the Premier of New South Wales, the Honourable Gladys Berejiklian. Gladys, welcome. Thank you, Damien, for that warm introduction. I'm absolutely thrilled to be here, leading a delegation from New South Wales. In Sydney, New South Wales, we are the film capital or cinema capital of Australia, and I've arrived in India and Mumbai in the Indian capital of the film industry. And I'm thrilled to be here, thrilled to be able to support the collaboration. And as Damien said, incredibly proud that 60% of people employed in the film industry in Australia are so in New South Wales. And thrilled tonight to be making a very special presentation. We've heard already about the success of the film Line. 12 AACTA awards, Oscar nominations, BAFTA nominations, a truly inspiring film that has changed the course of film investment and filmmaking between Australia and India. And tonight, it gives me great pleasure, absolutely great pleasure, to be able to present an award to the young man who received the lead actor award from AACTA recently. And I'm so thrilled that Sunny Pawar is here with his family. Round of applause for Sunny. The youngest ever person to have received the lead actor award in a film. And we're so proud to be able to present it to him personally. I flew all the way from Sydney to be here, Sunny, to present it to you personally. You deserve this acclaim, and I know that you will continue to move people and inspire people through your acting. For anyone in this room, if there is anyone who hasn't seen the film Line, you must see it. Sunny's acting ability is outstanding. All the actors actually in the movie are outstanding, and it's based on a real story of an Australian family, and it brings our cultures together even more. And it really, really debuts on the world stage a young actor who I know will make a big difference in the future. So, okay, it's a bit heavy. Yeah, don't worry, there'll be plenty of time. Now, officially say the AACTA Awards presented for 2017 for Best Lead Actor, I'm very proud to say, goes to Sunny Pawar for The Line. Can I also invite Sunny's parents and brother and sister to come on the stage to accept it, because I think your support has enabled Sunny to do his incredible work. Thank you. Sunny going to say a few words. Sunny, do you want to say a few words? I am very, very happy. Thank you to AACTA Award to give this award. Thank you, really. And Lion Uncle, God David Uncle, Pravesh Uncle, Tarvesh Uncle, and Rakesh Singh Uncle.
thank you all. And Lion Cruz, thank you. And thank you, my father. Can I also take this opportunity to thank Anupam and everybody who invests and collaborates from the Indian community in the film industry in New South Wales. And to also say that on this very important happy occasion, I'm very pleased as the Premier of New South Wales to announce that the New South Wales Government will extend hosting the AACTA Awards for at least another 2 years in Sydney. So this cements New South Wales as the cinema and television capital of Australia. I'm thrilled to be here to make that announcement, and I want to thank everybody involved in the film industry in New South Wales and in India for supporting and having confidence in the people of New South Wales, and we look forward to many collaborations in the future. Thank you, congratulations, and all of us can look forward to enjoying wonderful stories from India and Australia on the big screen. Thank you, everybody. Huge thanks, Premier. Brilliant. Indeed, so the Sydney AACTA Awards happen. They're a great event in a great city. So if you're interested to come to Sydney for the AACTA Awards this December or next, do come and see us after the event. I'd really like to also thank our Academy's General Manager who organised tonight's event. Jen, come out briefly. Jen, come as a team. Thank you, Jen. Jennifer North. We're going to have refreshments in here for another hour or so, so we'd love those of you who can stay to stay and network and mingle and get to know people better. Otherwise, thank you all very much for coming tonight. We appreciate it. Thank you.